हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं मनीष आहूजा और आप देख रहे हैं मनीष आहूजा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं हर दिन नए वीडियोस बनाता हूं। दिन में एक नया वीडियो आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, व्हाई हैवंट यू? टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वैसे तो ये चैनल 5 या 6 दिन पुराना है, लेकिन पहले दिन पे 24 ऑफ सितंबर को मैंने इस चैनल पे 24 न्यू वीडियोस अपलोड किए थे। हर दिन एक नया, हर घंटे में एक नया वीडियो अपलोड हो रहा था। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, लेट द फोमो किक इन, जाइए देखिए वो सारे नए वीडियोस। बताइए मुझे व्हाट डू यू लाइक, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या पसंद आ रहा है, मैं कौन से नए वीडियोस और बना सकूं, मैं आपके लिए और नया क्या कंटेंट बना सकूं। मतलब आपको इतना कस्टमाइज सर्विस और किसी ने दिया है आज तक? गो एंड फॉलो दिस चैनल, गो एंड सब्सक्राइब, टेल योर अदर पीपल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। व्हाई? आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, बिकॉज इन दिस channel I am going to share one new aspect of my life every day, and today I am going to introduce you to an aspect which has literally changed my life. Yes, मैं ऐसे ही कहने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ। Podcasts have literally changed my life. How? Let me tell you. सबसे पहली बात, अगर आप, if you are a podcast lover, please go to the comments and tell me what are the podcasts that you really love listening to. आप कौन से podcast के fan हैं? And if you don't know anything about podcast, please मुझे उसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं आपको अच्छे और नए podcast के बारे में introduce कर सकूं। Getting back to the topic, podcast in simple terms is like an audio lecture. But why would you want to listen to an audio lecture? Because ये lectures आप choose कर सकते हो. You can figure out which podcast do you want to listen to. There are podcasts about entrepreneurship, there are podcasts about cooking, there are podcasts about television shows. So literally you can choose which podcast you want to listen to, which lecture you want to listen to. But then again you would be like, लेकिन मैं ये क्यों करूँ? आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? You get to learn something new, you get to know somebody else's perspective, you get to know about people's experiences, you get to know about what they've learned, you save a lot of time and you get entertained for an hour. आप वॉक पे जाते हो तब पॉडकास्ट सुन सकते हो। मैं लिटरली इस लॉकडाउन में, कोविड के टाइम पे, जब बर्तन साफ करता हूँ और जब पोछा मारता हूँ ना घर पे, तब मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। बट लिटरली, सो बेसिकली यू कैन हैव मल्टीपल रीजंस एंड टाइम्स व्हेन यू कैन लिसन टू पॉडकास्ट। माय वाइफ लव्स लिसनिंग टू पॉडकास्ट व्हेन शी वांट्स टू गो ऑफ टू स्लीप। अपेरेंटली पिछले 4 दिन से उसको नींद कम आ रही है और पॉडकास्ट ज़्यादा सुन रही है, बट वरना क्या होता है, 4 या 5 मिनट पॉडकास्ट सुनती है एंड शी इज स्लीपिंग। So you will have your reasons to listen to your podcast. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पॉडकास्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिसके मैंने पता नहीं कितने एपिसोड्स फेवरेट करके रखे हुए हैं। इस पॉडकास्ट का नाम है हाउ आई बिल्ड दिस। इट्स मेड बाय दिस गाय कॉल्ड गाय राज। आई डोंट नो हाउ डज ही प्रोनाउंस हिज नेम। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में तो हमारे लाइफ में कंफ्यूजन चलता ही रहता है। गाय राज और गाय राज इज द नेम ऑफ द गाय। इट्स एन NPR podcast. NPR is a big podcast network out of US. How I built this में गाय राज हर एपिसोड में एक एंटरप्रेन्योर का इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं। एंड इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में he has interviewed some of the best people out of business world. He's also recently written a book which you will figure out if you do some work around it. I plan to read that book and probably sometime in the future I'll talk to you about that book as well. But having said that, listen to this podcast. मैं recently आज सुन रहा था सलमान खान और सैल खान के इंटरव्यू को। The guy who has, not the guy who has made a lot of movies in Bollywood, but the guy who's responsible to come up with Khan Academy. If you don't know what is Khan Academy, if you don't know who Sal Khan is, please listen to the podcast link which I have shared in the description below. You'll get to learn something new. You'll get to know about his journey. You'll get to know about how I built this as a podcast. And you will get one new recommendation in your life which I genuinely believe can make your life better. अगर आप एक ऐसे इंसान हैं who is a working professional, जो एक particular company में काम करते हैं, and you feel, why should I listen to an entrepreneurship based podcast? Well, believe me, 80% of people who've come to this particular podcast were employees at one point of time before they became entrepreneurs. So आपको एक नया perspective मिल सकता है. You can get to learn something new in your life. And because I think I've given you more than enough information about what podcast is, why should you listen to how I built this, and I've told you everything about what I wanted to tell you about this podcast, and because frankly my hand has started paining, I think that's more than enough for me, for you, for today. Let me know how did you like this particular video.
come talk to me in comments. Let's get to know each other better. Please tell me what podcast do you listen to, as I told you earlier. हाँ, ये चैनल इंग्लिश में है तो मैं हिंदी और इंग्लिश में से स्विच करता रहता हूँ. If you want me to talk more in हिंदी, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करूँ, which is actually the opposite of the languages that I should have made this video in, or whatever, let me know. The point is, connect with me, talk to me. You can also reach out to me on multiple social media channels. I've given you all the information about that in the description. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अब कल एक अगले वीडियो में. तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए. नमस्ते.